totally into a Linux machine. On the Windows operating system, he will first tell you how to install a virtualization tool, and within that virtualization tool, he is going to help you to download and install the Ubuntu operating system, which is one of the distribution of Linux, as I have talked in the first class. Okay, so this is how he is going to tell how you have to do it. Am I audible? Yes, sir. मैडम आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir, you are audible. Please proceed ahead. You are audible. मुझे आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों नहीं नहीं, you are audible, sir. Please proceed ahead. Hello? Yeah, I am audible. Okay. Okay. So we can start. Okay, so today we are here to just learn how we can make an installation of Linux operating system on any virtualization tool. So before that, we can just take a recap what is the virtualization tool. So nowadays, you know, or you heard the keyword that is cloud computing. Okay, and every day we use a cloud computing for our purpose. Just like you can access the James, you have a cloud. Okay, so behind that cloud environment, we have a virtualization infrastructure. And this particular virtualization infrastructure will offer you all the underlying hardware resources through a software instances. And earlier, these particular virtualization tools are commercially used to deploy a servers on the cloud platform or by the individual industries for deploying their servers. But nowadays, this particular virtualization tool is very much important as a student point of view. Okay, so using this virtualization tool, you can partition your machine resources, hardware resources into a containers, and then you can deploy any operating system over that particular container. And basically, this container is called as the virtual machines. And the different vendors offer you a different virtualization tool, just like VMware is one of the big organization. From starting, they are doing the work in virtualization only, and they offer a different tools for the virtualization purpose. That is a commercial tool as well as some academic tools. Okay. Nowadays, Oracle VirtualBox by the Oracle is one of the virtualization tool which is available to create a virtual machine and deploy the operating system. So as you can see on the PPT that what virtualization will do, first understand that concept. That is in virtualization, we have a hardware. Above that, we have operating system, and on operating system, we can install the applications. Okay, this is the traditional way to use any computer system. But when you use a virtualization tool, what it does, there are two ways to use that. That is either using a concept one or concept two. So in concept two, as you can see that you can install any of the virtualization tool on your operating system, and using that virtualization tool, you can create a multiple containers. That is called as a VM. That is shown in a purple color. That is virtual machines. And over that virtual machine, you can deploy any operating system. So basically, virtualization tool is nothing but a software-based approach which can partition underlying hardware resources into a number of containers, and that container is called as a virtual machine because this is not a physical machine. This is called as a virtual machine or VM. And on that virtual machine, you can install any operating system. So your virtualization tool will offer you to install any operating system onto the virtual machine. You can install any version of Windows. You can install any version of Linux operating system.
you can install Sun Solaris or any operating system which is available in the market. Okay, so basically we have to use this particular virtualization tool for installing your Linux operating system. As you have to study a Linux operating system, so definitely you have to install it on your machine. You should not dependent onto the laptop laboratory machines for running the practicals or making the practice of Linux, because जितनी आप ज़्यादा practice करोगे Linux की उतने आपको commands याद रहेंगे, options याद रहेंगे. So for that, definitely what you have to do, you have to install a Linux operating system on your laptop or desktop. But you say, sir, already we have Windows operating system over that. How we can install the Linux operating system again? Either we should remove that Windows operating system and then install Linux. No, that is not required. Your virtualization tool will resolve that problem. That is, you can keep all your resources, all your Windows operating system and application which you already installed on your laptop or desktop as it is. Just what you have to do, you have to go onto the site. We have a VMware Workstation or Oracle VirtualBox. So Oracle VirtualBox is very lightweight. Okay, students, please understand that here there are many virtualization tools. Yeah. There are So many you can distributions. site for Yeah. the VirtualBox. Okay. So you can search from the Google VirtualBox, that is Oracle VirtualBox. You can open this particular site, and this particular site will offer you a virtualization tool free of cost. No any charges, no need to pay anything. These are all free stuff. You can download any version, that is latest version of this VirtualBox is 6.1. So on what platform you can install that, you want to install that particular virtualization tool, you can choose, that is Windows host, Linux or Sun Solaris. So it will offer installation of this tool on any platform. You can go for Windows host and it will ask to save this particular file, that is VirtualBox 6.1, size is 103 MB. Sir, So just you just a can save minute. that particular Sir, file on your machine. Please go a bit slow. Download that particular file, so that is available. Okay. So you can just click that particular VirtualBox once that is downloaded. Okay, so it will start installing that particular Oracle VirtualBox on your machine. You can click on to the next. Slow जाओ. मेरे को इसमें आवाज नहीं आ रहा, मेरा जो ऑडियो है ना, रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? हेडफोन है क्या दूसरा? आवाज नहीं आ रहा इसमें से. Okay. So anyone is having a doubt? What is virtualization tool? Please type your question. Okay. Shall we again start with this particular PPT? Please unmute yourself and ask if you have any doubt, or you can type in the text box. Okay. So what we require this virtualization tool to adopt the virtualization. And for that, we have a two virtualization tool which is available in the market. That is, one is Oracle VirtualBox and another is VMware Workstation. Okay. Okay, I will repeat that. Okay. So you required a virtualization tool to install that particular virtualization tool or operating system.
So for that, what we required this particular virtualization tool. And how we can download that particular virtualization tool? Just you can go Google, search virtual box. Okay, so it will show this site, that is Oracle VM Virtual Box. Is it clear? गूगल में जाओ, गूगल में सर्च करो आप Oracle Virtual Box or simply write down the virtual box. Okay, or either Oracle Virtual Box and download. So it will provide this link. Click onto this link. Okay, so it will open this site. Is it clear? Then after you can Yes, select sir. on which platform you want to install this particular virtual box. So it will offer Windows as well as the Linux platform. आप दोनों के ऊपर Oracle Virtual Box को आप इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, तो अभी आपको आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके मशीन के ऊपर. जैसे मेरे मशीन के ऊपर में विंडोज इंस्टॉल्ड है यहाँ पे. ओके, और मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर Oracle Virtual Box इंस्टॉल करना है. तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द विंडोज होस्ट, क्लिक ऑन टू दिस विंडोज होस्ट. इट विल आस्क फॉर सेव द फाइल. ये आपको क्या पूछेगा, ये पूछेगा आपको कि यू वांट टू सेव दैट फाइल. तो आपको इंस्टॉल करना, तो डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड द एग्जीक्यूटेबल फाइल. ओके, सो व्हाट यू डू, जस्ट क्लिक ऑन टू द सेव बटन. Okay, is it clear? Up till now, this is okay. How to download the Oracle Virtual Box? Is it clear? Chat Yes, box में sir. yes or Yes, sir. करो. Yes, sir. Okay, so this is clear. That is from where we have to download that particular virtual box. Okay, so once you download that virtual box, next we have to install that. How we can install? We have downloaded that virtual box. Okay, just simply click onto that. Click करने के बाद simple process है. Just you have to click a next, next. All the check boxes will be created. That is shortcut you want to create it onto the desktop and all this. Then again click next and yes. Okay, then start install. So it will start installing Oracle Virtual Box on your machine. It will ask, you can start. Okay, so already on my machine Oracle Virtual Box is already installed and that is running. Okay, that will it will show the message because already my application is running, interface is running. So simple, you can go for that. You can, I will close this window and I will retry. It will okay, so in this way we can install that particular Oracle Virtual Box. Simple step है, next करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इंस्टॉल बटन क्लिक करो. इंस्टॉलेशन के बाद वो 2-4 मिनट में ही Oracle Virtual Box इंस्टॉल हो जाता है. It do not take so much more time. Within 5 minutes your Oracle Virtual Box will be available on your machine. So once you install this particular virtual box, you got this icon, Oracle VM Virtual Box icon on your desktop. Live कर रहे हैं ना? Everyone is downloading this particular software, doing this activity live. You can parallel download that Yes, sir. particular software on your machine and try to install that. Parallel activity रखो. अगर कहीं difficulty आ रही है तो then you can ask me. You can post your question in the chat box. I will wait for that. So everyone has downloaded the Oracle Virtual Box? Yes?
ओके, तो राइट नाउ दिस इज ओके, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया आपका, इंस्टॉल करके देखा आपने, इंस्टॉल हो गया, क्लिक ऑन टू, डबल क्लिक करो उस पर्टिकुलर सेटअप फाइल पे, है ना, दिस सेटअप फाइल, उसको डबल क्लिक करो, इंस्टॉलर शुरू हो जाएगा आपका। Okay, so you have installed that Oracle VirtualBox. So once installation is finished on your desktop, this shortcut is created. That is Oracle VM VirtualBox. Is it clear? Okay, सबकी डेस्कटॉप पे आ गया ये आइकन? Yes. Okay. So open this particular Oracle VM VirtualBox. So now we are opening this particular virtualization tool. जहाँ पे हमें क्या करना है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना है। ओके, नाउ दिस इज इंटरफेस फॉर योर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। जब आप इंस्टॉलेशन होने के बाद जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे शॉर्टकट आइकन पे, तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो दिस इज इंटरफेस फॉर योर वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। अभी हमने जैसे पीपीटी में देखा था कि व्हेन वी इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर वर्चुअलाइजेशन लेयर और वर्चुअलाइजेशन टूल ऑन योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट ऑफर यू टू क्रिएट अ मल्टीपल वर्चुअल मशीन। जैसे कंसेप्ट वन में एज यू कैन सी दैट इज हार्डवेयर है, आई हैव विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, इस लेयर पे विंडोज 10 है मेरा, उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस मैंने इंस्टॉल किए हैं। नाउ आई इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एज अ वीएमएम, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल मशीन मॉनिटर टूल और वीएमएम टूल। So this tool I have installed as a Oracle virtual box. Now what I have to do, I have to create a virtual machine over that. I have to create a virtual machine. How we can create? Go into this particular interface. सबके पास ये interface आ गया, सबका application open हो गया है? Yes. Okay. So someone has a question that is 32-bit is not supported. If your host operating system is of 32-bit and if you are trying to install 64-bit Oracle VirtualBox, that should not be supported. Okay, so you have to download a lower version of Oracle VirtualBox. उसमें लिस्ट में आ जाता है, either you have to download the 32-bit Oracle VirtualBox, क्योंकि अगर आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 32-bit का है तो 64-bit OS उसके ऊपर नहीं जाएगी। Either your host ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर के ऊपर जो डायरेक्टली आप इंस्टॉल है ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करेंगे उसको बोलते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में। ओके, सो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी क्या है, जैसे मेरे मशीन के ऊपर विंडोज 10 है 64 बिट,
ओके तो मैं जो वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और ओएस इंस्टॉल करूंगा तो दैट विल सपोर्ट अ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर ये 32 बिट है and you are trying to install a 64-bit OS onto the VM, that is not permitted. Or either your VMM is also not supported 64-bit. अगर 32-bit OS है आपकी, and if you are trying to install a 64-bit virtual box, then that is again not supported. So you have to find out some lower version of Oracle VirtualBox and try to install that. Okay, so is it clear? So once you install this particular Oracle VirtualBox and open this, you got this kind of interface. Now I have created this virtual machine. तो आपकी इसमें ये कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे मेरे इंटरफेस में एक फेडोरा दिख रहा है आपको 64 बिट, रेड हैट 8 दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रही है और तीसरी दिख रही है उबंटू 20। So I have installed 3 different operating system onto the different virtual machine. मगर आपकी इंटरफेस में ये नहीं रहेगा। This interface will be blank. जैसे आप रॉ कर रहे हो, अभी आपने फर्स्ट टाइम अगर Oracle VirtualBox इंस्टॉल किया है तो आपकी इसमें ये तीनों नहीं दिखेगा, वो ब्लैंक रहेगा, because I have already installed that OS, so that is shown. So how we can create a new operating system? जैसे ये इंटरफेस आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपकी इसमें कंसिडर की this operating system is not available, then you can select go for selecting this particular new, because you have to create a new operating system, create a or new virtual machine, and you have to install a new operating system onto that. To click onto this new button. Is it clear? जैसे हमें नई वर्चुअल मशीन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू, you have to create a new. Okay, तो new operating system, just I have to install Ubuntu 20 again. So what I will do, this is a name you can specify. Right now you can see this particular screen. तो इस स्क्रीन में क्या दिया है? 3-4 ऑप्शंस है. That is name is one of the option. Machine folder, type of operating system Microsoft Windows, version that is Windows 7 64-bit. But as I try start typing Ubuntu, that is Ubuntu. तो जैसे ही मैंने Ubuntu टाइप किया, so what happens? बाकी के जो दो ऑप्शन है टाइप एंड वर्जन, ऑटोमेटिकली दैट इज चेंज. So your virtual machine automatically identify the type of that particular operating system. जैसे मैंने Ubuntu लिखा तो immediately he has identified this Ubuntu is a Linux operating system or flavor of Linux operating system, and he has selected Ubuntu 64-bit. आपको 64-bit नहीं डालना है. आपके पास अगर 32-bit की इमेज है, आपका मशीन अगर सपोर्ट नहीं करता है 64-bit, लो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, तो आप Ubuntu 32-bit भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड 64-bit. मगर अगर आपका मशीन अगर सपोर्ट नहीं करता है, आपके पास उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32-bit का ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 64-bit का Ubuntu आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे. ओके, सो व्हाट यू डू, यू कैन मैन्युअली सिलेक्ट दिस 32-bit. तो जैसे लिनक्स के काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. फेडोरा है, रेड हैट आता है, सूज लाइनक्स है, उबंटू है, कुबंटू है. तो लिनक्स के ऐसे काफ़ी सारे फ्लेवर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड ऑल दिस फ्लेवर्स आर सेम. आप पढ़ोगे फ्यूचर में, मैडम आपको पढ़ाएंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट फ्लेवर्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शनैलिटीज, व्हाट आर द ऑफरिंग्स ऑफ दैट इन कंपैरिजन. But right now, just understand that is Red Hat is one of the popular Linux distribution. Another one is Red Hat. Red Hat is commercially used by all the IT industries. Okay, so that is one of the flavor of Linux operating system. जैसे यहाँ पे मैंने Ubuntu लिखा. If I write down the Fedora, okay, so I have written the Fedora. So again, he has selected the Linux and Fedora 64-bit. Automatically change हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया. Simply I have given the name of that particular operating system कि मुझे कौन सा इंस्टॉल करना है. तो मैंने लिखा फेडोरा, तो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट किया. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड हैट, ऑटोमेटिकली है सिलेक्टेड. ड्रॉप डाउन में आप देखो वर्जन में रेड हैट 64-bit इज सिलेक्टेड. तो दैट इज नॉट सिलेक्टेड बाय मी, ऑटोमेटिक दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द वर्चुअल बॉक्स. तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली यू हैव टू स्पेसिफाई. जैसे यहाँ पे मैं विंडोज लिखता हूँ,
ऑटोमेटिकली विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आ गए यहाँ पे टाइप में, विंडोज 7 आ गया, आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करना है। ऑल दिस वर्जन्स आर अवेलेबल, यानी विंडोज 3.1 से लेके आप जो भी रिसेंट वर्जन है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। अगर वो लिस्टिंग में नहीं है तो अदर्स में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्चुअलाइजेशन टूल। ओके, तो विंडोज 3.1 इज द ओल्डेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। Then Windows 95, 98, that Windows Millennium, then Windows NT, NT4, 2000 XP, then 2003, Vista 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. So almost all the versions of Windows are available. If you go for Red Hat, it will also offer you all the flavors of Red Hat: OpenSUSE, TurboLink, Ubuntu, SIGDROS. ऑल दिस फ्लेवर्स आर। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिनक्स 2.2 इज द ओल्डर वन, देन लिनक्स, आर्क लाइनेक्स, डेबियन लाइनेक्स, आपने सुना होगा, काफ़ी जगह ये नाम होते हैं। डेबियन अगेन इज अ फेमस, उबंटू इज बेस्ड ऑन टू द डेबियन, फेडोरा इज बेस्ड ऑन टू द रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फेडोरा है, जिंटू है, जो रिसर्चर्स लोग यूज करते हैं जिंटू, मैंड्रीवा है, ओके, देन रेड हैट, OpenSUSE, Turbo Linux, and Ubuntu 34-bit, 32, 64-bit. Okay, so we will go to install the Ubuntu Linux. यहाँ पे आप बस Ubuntu लिखो। अब जैसे यहाँ पे मैंने वर्जन डाला है तो दैट यू कैन स्पेसिफाई कि कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया है। तो ये यहाँ पे आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप दिख रहे हैं यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन्स मैंने क्रिएट किया है। तो आई विल से राइट डाउन Ubuntu 20 new VM. Okay, because this is a new virtual machine I have to create with this new installation. क्योंकि Ubuntu 20 already मैंने किया है, so I have specified. So automatically it has detected Linux as a type and version as a Ubuntu 64. इतना समझ में आ गया आपको क्या करना है? Yes. Red Hat is a, you have to pay for that. If you want to go for the commercial version, then you have to pay for that. अगर आपको Red Hat के अगर फ्लेवर चाहिए, फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए CentOS करके आता है जो Red Hat का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल ऑलमोस्ट सपोर्ट 99% फंक्शनलिटी ऑफ योर Red Hat ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिनको Red Hat की फंक्शनलिटी चाहिए वो CentOS यूज कर सकता है। अगेन CentOS इज मैनेज्ड बाय द Red Hat. Fedora is again managed by the Red Hat. Fedora, Red Hat and CentOS is managed by the same organization, by the Red Hat organization. तो मोर और Red Hat इज कमर्शियल वर्जन। अगर आपको वो सेम फंक्शनलिटी चाहिए, ऑल द फंक्शनलिटीज ऑफ द Red Hat, देन यू कैन गो फॉर द CentOS। एंड आपको अगर लेटेस्ट कुछ नए वर्जन्स चाहिए तो देन यू गो फॉर द Fedora. Okay, so that is a different versions are available. So Red Hat basically used for the commercial one. CentOS is almost same, 99% same as Red Hat will offer. So you can go for that if you require. So is it clear? New this screen, just you have to specify इस screen में आपको क्या करना है। जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, जैसे Red Hat करना है, Ubuntu करना है, Red Hat करना है, वो आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। Then click on to the next button. Next इसमें पूछ रहा है कि RAM कितनी, because we are creating the virtual machine. तो virtual machine is nothing but equivalent of your physical machine. जैसे आप आपके फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उसी तरह से वर्चुअल मशीन 100% फंक्शनलिटी आपको ऑफर करता है, सेम एज अ फिजिकल मशीन। तो आप जैसे एक फिजिकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर रहे हो। और आपने पहले बताया कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, उबंटू। आपने वो बताया उबंटू आई हैव टू इंस्टॉल, तो आपने नाम दे दिया। नाउ यू हैव टू एलोकेट अ रैम। तो सेकंड ऑप्शन ये पूछेगा रैम, सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम इन मेगाबाइट्स टू बी एलोकेटेड टू द वर्चुअल मशीन। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि बाय डिफॉल्ट इट विल टेक अ 1024, मींस दिस ऑपरेटिंग सिस्टम requires a minimum 1 GB of RAM for proper functionality or proper running of that operating system. आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मेरे मशीन में कितना रैम है, 8 GB रैम है, ओके, 8192 MB।
तो ये जो दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में 8192, दिस मच रैम इज अवेलेबल ऑन माय physical machine, that is 8 GB RAM is available. Okay, out of by default that particular virtual machine has taken 1024. बट मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए, लैगिंग नहीं आना चाहिए, अच्छे से रन होना चाहिए, तो आई विल इंक्रीज दैट. तो आइदर यू कैन इंक्रीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइडर बार, आप इसको स्लाइड करके भी बढ़ा सकते हो. आइदर यू कैन टाइप इट, जैसे आपको 2 GB अगर अलोकेट करना है, यू कैन राइट डाउन 2048, क्योंकि 1024 MB is equal to 1 GB. So you want to allocate a 2 GB, so you can type the 2048. So automatically the slider bar will be increased and that will be set to the 2 GB. अब इसमें कुछ मार्किंग्स दिए हैं, उस मार्किंग के बियॉन्ड नहीं जाने आपको. ग्रीन मार्क तक जो है वो आप अलोकेट कर सकते हो, इसके आगे जाओगे तो आपको मैसेज देगा. ओके, that is critical, means your host operating system also requires some RAM to work. So आप पूरी रैम अगर वर्चुअल मशीन को दोगे तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इश्यूज आ जाएंगे. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अलोकेट अवेलेबल रैम, दैट इज 2048, 2 GB sufficient for that. Okay, so this is a RAM allocation. Is it clear to everyone? तो जैसे हम लोग मशीन को रैम अलोकेट कर रहे हैं, जैसे आपके मशीन में भी रैम होता है 2 GB 4 GB, तो वर्चुअल मशीन में मैं क्या कर रहा हूँ, रैम अलोकेट कर रहा हूँ. तो आई हैव अलोकेटेड 2048 MB of 2 GB of RAM. Then click also to the next. अब next इसमें क्या पूछ रहा है, the second option which is important, that is hard disk. RAM हमने allocate कर दिया. Second, what we required a hard disk to install the operating system and to store our data, users data और system data. So उसके लिए हमें hard disk लगेगा. Okay. So second option में, second screen में वो पूछ रहा है कि hard disk, create a virtual machine and hard disk. Okay. तो इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं. Do not add a virtual hard disk. Second option is create a virtual hard disk now. And third option is use an existing virtual hard disk file. अब इसका मीनिंग यह है कि आपको अगर अभी हार्ड डिस्क का साइज पता नहीं है, ओके, आपको पता नहीं कि कौन सा फ्लेवर आप इंस्टॉल करने वाले हो, जस्ट आपको वर्चुअल मशीन बना के रखना है और हार्ड डिस्क बाद में आप ऐड कर, तो आप ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, डू नॉट ऐड वर्चुअल हार्ड डिस्क. बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड क्या था, सेकंड ऑप्शन, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, बिकॉज वी वांट टू इंस्टॉल उबंटू नाउ. सो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन के लिए जाएंगे, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ. और बाय डिफॉल्ट वही ऑप्शन होता है कि नहीं. अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट के बाद, तो बाय डिफॉल्ट दिस सेकंड ऑप्शन इज सिलेक्टेड. तीसरा ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, यानी पहले अगर आपने उबंटू डाल के रखा है और उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है किसी हार्ड डिस्क में, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. अभी के लिए इतना छोड़ दो. अभी आप बस इतना ध्यान में रखो कि यू हैव टू सिलेक्ट डिफॉल्ट ऑप्शन, दैट इज क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ. ओके, द रिकमेंडेड साइज ऑफ दिस हार्ड डिस्क इज 10 GB. सो अगर आपको उबंटू वर्जन डालना है, उबंटू 64 बिट OS अगर इंस्टॉल करना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 GB. तो उसने बताया the recommended size of the hard disk is 10 GB. So we can say create. Now again 3 options are there, that is VDI, VHD and VMDK. तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है VDI, तो VDI ही सिलेक्ट करो आप. डिफॉल्ट ऑप्शन जो दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल डिस्क इमेज. ओके, जो आपके अंडरलाइंग जो स्टोरेज है आपकी हार्ड डिस्क, उसमें से एक वर्चुअल हार्ड डिस्क ये बना के देगा आपको. सो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा, आइडेंटिफाई और उसमें VDI सिलेक्टेड रहेगा, दैट इज वर्चुअल डिस्क इमेज. VDI स्टैंड फॉर वर्चुअल डिस्क इमेज. तो बाय डिफॉल्ट वही ऑप्शन होता है. यू कैन क्लिक ऑन टू द नेक्स्ट. अगेन उसके बाद वो पूछेगा कि डायनामिकली एलोकेटेड या फिक्स साइज, तो यू कैन बाय डिफॉल्ट डायनामिकली एलोकेटेड. वो लिनक्स में डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह होता है, लिनक्स विल यूज अ डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट. सो यू कैन गो फॉर द default option, that is dynamically allocated. Then click on to the next. अब next के बाद वो पूछेगा size of that hard disk. तो by default उसने कहा था हमें कि 10 GB minimum required है, तो उसने क्या किया, 10 GB है सिलेक्टेड. बट अगर आपको लगता है कि 10 GB कम होगा, मुझे डेटा भी स्टोर करना है, तो यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दैट हार्ड डिस्क. कुछ उसको बढ़ा दो, या आप यहाँ से डायरेक्टली, मैं करता हूँ इसको 20 GB अलोकेट कर देता हूँ. मेरे पास 2 TB हार्ड डिस्क है मेरे मशीन में,
यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो बताएगा, वर्चुअल बॉक्स आपको बताता है कि आपके पास कितनी रैम अवेलेबल है, हार्ड डिस्क कितनी अवेलेबल। रैम में हमने देखा था कि 8 GB उसने दिखाया था, यहाँ पे भी वो दिखा रहा है आपको 2 TB 2.0 TB। सो इन माई मशीन आई हैव 2 TB ऑफ हार्ड डिस्क। बाय डिफॉल्ट 10 GB चाहिए, मैं उसको 20 GB कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटा भी स्टोर करना है, तो आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्ड डिस्क। तो मैंने क्या किया, 10 GB से उसको 20 GB कर दिया। नाउ आई क्लिक ऑन टू द क्रिएट। Okay, so when I click on to the create, if everything goes right, then it will add one more hard disk with the new name. तो हमने new create किया था, okay? तो new click करने के बाद we have given the name of that particular operating system as we are written, that is Ubuntu 20 new VM, okay? And we are allocated, ये बाजू में आपको right hand side में ये पैनल दिख रहा है, okay? क्योंकि ये selected है, blue color से जो रहेगा highlighted वो selected है। जैसे फेडोरा में सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। रेड हैट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिखेंगे। ओके, तो अब हमने क्या किया था, उबंटू 20 न्यू वीएम एक वर्चुअल मशीन हमने बनाया। नाउ वी आर क्रिएटेड द वर्चुअल मशीन, वी आर नॉट इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वी आर क्रिएटेड अ रॉ वर्चुअल मशीन ऑन टू द टूल। यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएगी। ओके, ये सारा राइट हैंड साइड में आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा। नेम ऑफ दैट machine is Ubuntu 20 new VM, operating system is Ubuntu 64-bit, RAM कितनी हमने allocate की थी 2 GB, that is 2048, okay, acceleration that is VTX AMD V. So this is a by default your processor will support the virtualization, so that is VTX is by the Intel and AMD V is by the AMD processor. उसके बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हो। स्टोरेजेस 20 GB की हमने हार्ड डिस्क बनाई थी, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्टोरेज। पे अगर हम लोग जाते हैं साटा एंड नॉर्मल एंड 20 GB। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट। आप चेंज कर सकते हो उसको, बट हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे अभी। सो वी आर क्रिएटेड द वर्चुअल मशीन। अभी आपका क्या हो गया, वर्चुअल मशीन इज रेडी। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस और नो? At this point, everything is great. How Yes, we sir. can create a virtual machine Yes, using sir. Oracle VirtualBox? Yes, sir. सिंपल है। यहाँ पे ब्लू कलर से जो न्यू बटन उसको क्लिक करो। यहाँ पे आपको जो इंस्टॉल करना है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैं बोलता हूँ रेड हैट मुझे इंस्टॉल करना है, फिर से रेड हैट न्यू वीएम, तो ऑटोमेटिकली उसने रेड हैट ले लिया। नेक्स्ट करो, रैम को बढ़ाओ कम ज़्यादा करो, जितना चाहिए उतना करो, या यहाँ से टाइप करके आप दे दो 2048 2 GB एलोकेट करो। देन हार्ड डिस्क पूछेगा, बाय डिफॉल्ट क्रिएट न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क ऑप्शन है, आप उसको क्रिएट करो। वीडीआई बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है, वो करो। डायनामिक एलोकेटेड वो भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है। जैसे देखो, अभी हमने उबंटू लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट किया था, तो बाय डिफॉल्ट उसने कितना लिया था 10 GB हार्ड डिस्क के लिए। बट मैं अगर रेड हैट इंस्टॉल कर रहा हूँ तो उसके लिए 8 GB चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये टेकन 8 GB, तो आई कैन इंक्रीज इट टू go for allocating 50 GB, 15 GB of hard disk. Then I will write down, click onto the create. So as you can see, that is Red Hat new virtual machine is created. Now earlier हमारे पास कितने virtual machines थे पहले? 3 थे, Fedora, Red Hat 8 and Ubuntu 20। और अभी हमने 2 फिर से बनाए, एक Ubuntu 20 न्यू वर्चुअल मशीन एंड Red Hat न्यू वर्चुअल मशीन। तो अभी हमने ये 2 बनाए। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, अभी हम लोग इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करें? Excuse me, Okay? sir. उसके लिए हमें क्या चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज यू रिक्वायर्ड ISO फाइल। व्हाट यू रिक्वायर्ड? Excuse यू me, sir. रिक्वायर्ड ISO इमेज। ओके, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है उसका क्या लगेगा, आपका ओएस का ISO
ISO इमेज फाइल क्या रिक्वायर्ड है आपको? फॉर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यू रिक्वायर्ड ISO इमेज फाइल. अब ये कहाँ से डाउनलोड करोगे? अगेन यू कैन गो ऑन टू द साइट. जैसे उबंटू चाहिए आपको, उबंटू के साइट पे चले जाओ आप, है ना. यहाँ पे उबंटू गूगल में सर्च करो, उबंटू. उबंटू डाउनलोड दिया है यहाँ पे. गो इन टू दिस साइट दैट इज ubuntu.com. यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शंस मिलेंगे काफ़ी सारे. ओके. लेटेस्ट जो उबंटू है दैट इज LTS वर्जन इज उबंटू 20.04 वर्जन इज अवेलेबल. अगर आपको दूसरे वर्जन चाहिए, इसमें डेस्कटॉप वर्जन आता है, देन सर्वर वर्जन आता है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे जा सकते हो. तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वर्जन्स मिलेंगे. ओके. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, Ubuntu desktop, Ubuntu server, Ubuntu for IoT, Ubuntu for cloud. So different Ubuntu flavors are available according to your requirement. अब आप आपके स्टडी पर्पस के लिए आप Ubuntu को यूज करना चाहते हो तो आपको सर्वर वर्जन के लिए जाने की जरूरत नहीं है, because you are just typing your what is say commands onto the terminal. You are not configuring any mail server or DNS server, or you are not commercially configuring that as a server for providing the application. तो आपका पर्पस क्या है? स्टडी. तो आप किस वर्जन के लिए जाओगे? उबंटू डेस्कटॉप वर्जन. उबंटू सर्वर कमर्शियल के लिए जाते हैं, IoT के लिए उन्होंने उबंटू दिया है, हम लोग इसको ये करेंगे. When you select this, it will give the download option to you. Okay, तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ and it will start downloading. यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा Ubuntu 20.04 desktop AMD 64-bit. So I'm installing a 64-bit operating system. And what is the extension of that file? .iso. ओके. तो ये फाइल चाहिए आपको. कभी भी अगर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, आइदर यू वांट टू इंस्टॉल रेड हैट, आइदर यू वांट टू इंस्टॉल फेडोरा, उबंटू, विंडोज, यू रिक्वायर्ड ISO फाइल. और इसकी साइज क्या है? 2.5 GB. तो आप उसको सेव करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू होगा. तो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया है. आपको फेडोरा अगर चाहिए तो यू कैन गो इन गूगल, देन फेडोरा, fedora.org पे जाओगे आप. फेडोरा में भी काफी सारे वर्जन्स है, फेडोरा वर्क स्टेशन एंड फेडोरा सर्वर. जनरली दिस इज कॉल्ड द डेस्कटॉप वर्जन एंड द सर्वर वर्जन. हर एक लिनक्स फ्लेवर में आपको ये मिलेगा. ओके. डेस्कटॉप वर्जन एंड सर्वर वर्जन. जैसे उबंटू में भी हमने देखा था कि उबंटू में 2 वर्जन है हमारे पास. ओके. डेस्कटॉप एंड सर्वर. तो सिमिलरली फेडोरा में भी वर्क स्टेशन, फेडोरा वर्क स्टेशन इज द डेस्कटॉप वर्जन एंड फेडोरा सर्वर इज अ सर्वर वर्जन. तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड पूछेगा आपको एंड इट विल आस्क 32-bit या 64-bit आपको चाहिए. so you can download it from here. So is it clear from where we can download the Ubuntu? क्योंकि आपको Ubuntu लेने वाले तो हम लोग Ubuntu ही देखेंगे. Is it clear? That is from where we can download Yes, the sir. Ubuntu. That is from Ubuntu official site and that is a free of cost. 2.5 GB की वो इमेज फाइल है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. तो these are the images I have downloaded. मेरे पास ये सारी images है. So that is a CentOS, as you can see. Fedora 15 version, Fedora 30, Fedora 31, Red Hat 8.1 जो मैंने इंस्टॉल किया है. Fedora भी मैंने एक मशीन में यहाँ पे इंस्टॉल किया, that is Red Hat 8 I installed. Fedora I installed. ये शेयर कर दूंगा ना मैं, ये हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग उनको शेयर कर देंगे. नहीं, इनको मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट करूंगा ना उनको. ये एक कंप्लीट कर लेता हूँ उनको प्रोसेस में. हाँ नहीं, वो डाउनलोड सिंपल है बाकी का प्रोसेस. सो आई विल फिनिश इट. किसी को डाउट है तो फिर से हम लोग एक और सेशन लेंगे. जब भी आप सेकंड आपने
ISO stand for International Standard Organization. So we follow the ISO standard. जैसे नेटवर्किंग में भी ISO मॉडल होता है, आपने सुना होगा ISO OSI मॉडल होता है. तो ISO is the international standard organization who will offer that a different standard for the different domain. जैसे हमारे यहाँ पे भी ISO ऑडिट होता है. किसी ने क्वेश्चन पूछा है मुकेश कुमार, that is ISO stand for. The ISO means International Standard Organization. So this particular file or installer file we can go. Okay, तो यहाँ तक समझ में आया सबको? Yeah, it is a file extension. Again that is जैसे हमारे यहाँ पे AXE होता है सेटअप के लिए, इमेजेस के लिए ISO फाइल्स होता है, ISO एक्सटेंशन होता है. ओके, तो जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे सारे आपको ये ISO फाइल्स मिलेंगी, डिस्क इमेज. ओके, so you can see the properties of that. So that is the ISO file, disk image file. Okay, so .iso. तो यहाँ तक क्लियर हो गया? Is it clear? ओके, तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे. डाउनलोड होने के लिए काफी टाइम लगेगा. यू वेट फॉर डाउनलोडिंग. आई विल explain the remaining process. Okay, then you can try that particular process for installing the OS. तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे. यहाँ से डाउनलोड होने के बाद आपके मशीन के ऊपर ये ISO फाइल आ जाएगी. ओके, तो ये मेरे पास ISO फाइल है. दैट इज Ubuntu 17 मेरे पास अवेलेबल है, एंड Ubuntu 20.04 जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था वो भी मेरे पास अवेलेबल है. अब उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो. ओके, इंस्टॉलेशन आप बाद में कर लेना. नाउ क्लिक ऑन टू दिस मशीन. अभी जैसे Ubuntu 20 न्यू वर्चुअल मशीन पे हमें इंस्टॉल करना है Ubuntu. तो मैं पहले क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा. आई विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर. तो ब्लू से हाईलाइट हो गया, मीन्स दैट इज दैट पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन इज नाउ सिलेक्टेड. ओके, उसके बाद ये स्टेप ध्यान में रखो, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इनटू द सेटिंग ऑप्शन. अब हमने पहले इसमें न्यू किया था. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन टू द सेटिंग. कहाँ पे जाना है? सेटिंग्स. कहाँ पे जाना है आपको? सेटिंग्स में. तो यू कैन क्लिक ऑन टू द सेटिंग. It will open this particular interface. When you click onto the setting option, it will open this particular window, that is Ubuntu 20 new VM setting. अब इसमें आपको कहाँ पे जाना है? स्टोरेजेस. क्योंकि हमें क्या करना है, इमेज फाइल को हमारे CD ड्राइव में, जैसे आपने देखा होगा कि अगर मुझे CD या DVD में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो इंस्टॉल करना है, तो आई हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर DVD इनटू अ DVD राइटर और DVD रीडर. इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज फाइल को DVD रीडर या उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल ड्राइव के साथ लिंक कर रहे हैं. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ISO फाइल ये जो हमारे पास अवेलेबल है, नाउ हाउ टू पुट दिस ISO फाइल, क्योंकि इसको रीडर लगेगा ना. वी रिक्वायर्ड आइदर द DVD रीडर और CD रीडर. तो नाउ इन दिस स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग दिस पर्टिकुलर ISO इमेज फाइल ऑनटू द DVD रीडर. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन दिस ऑप्शन, दैट इज सेटिंग. सेटिंग में स्टोरेजेस में जाओ आप. ओके, स्टोरेजेस में जाने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी. इस स्क्रीन में कंट्रोलर आईडी करके दिया है. इज इट क्लियर? कंट्रोलर आईडी समझ में आ रहा है सबको? कहाँ से जा रहे हैं हम लोग? स्पीड इज सफिशिएंट, इससे स्लो चलना है? सर थोड़ा फास्ट. यस और नो? चैट बॉक्स में टाइप करो. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, सेटिंग में जाने के बाद आपका ऑप्शन है, लिख के रखो, स्टोरेज. काफी सारे ऑप्शन है, मगर आपको क्या करना है, फोर्थ ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट, दैट इज स्टोरेज. स्टोरेज में यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सबसे ऊपर है कंट्रोलर IDE एंड कंट्रोलर SATA. तो SATA इज रिलेटेड विथ योर हार्ड डिस्क, और कंट्रोलर IDE जो होता है वो होता है आपका ऑप्टिकल ड्राइव के लिए, जो CD ड्राइव बोलते हैं हम लोग, या DVD ड्राइव में होता है. हमारे मशीन में जैसे होता है ना, DVD राइटर होता है, रीडर होता है, तो वो फिजिकल होता है, बट यहाँ पे ये वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है. दैट इज अवेलेबल इन वर्चुअल फॉर्म. अब यहाँ पे दिख रहा है एम्प्टी, कंट्रोलर ID के नीचे है एम्प्टी. ओके, तो आपको अभी क्या करना है, इमेज फाइल को यहाँ पे लिंक करना है. तो ये जो पहला ऑप्शन है, दैट इज सर्कल एंड प्लस, स्क्वायर वाला नहीं, दूसरा सेकंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, ऐड ऑप्टिकल ड्राइव.
सेकंड करोगे तो हार्ड डिस्क ऐड करेगा एडिशनल। हमें क्या करना है, आईएसओ फाइल को लिंक करना है हमारे ऑप्टिकल ड्राइव के साथ। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन टू द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऐड ऑप्टिकल ड्राइव। प्लस करने के बाद ही विल आस्क द ऑप्शन। जैसे पहले ही मैंने उबंटू यहाँ पे ऐड करके रखा है, अगर आपकी इसमें नहीं है तो देन व्हाट यू डू, यू कैन गो फॉर ऐड। जहाँ पे भी आपका इमेज फाइल स्टोर्ड है, आप डेस्कटॉप पे डाल के रखो, आपके डी ड्राइव में डाल के रखो, सी ड्राइव में डाल के रखो। आप उस लोकेशन को एक्सप्लोर करो थ्रू दिस पर्टिकुलर बॉक्स। दिस पीसी मेरे इसमें कॉलेज कंटेंट एंड देन आई हैव सॉफ्टवेयर्स एंड लिनक्स ओएस। इस फोल्डर में मैंने सारे लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस डाउनलोड किए वो रखे हैं। तो मुझे कौन सा यहाँ पे इंस्टॉल करना है, उबंटू 20.04। आई विल सिलेक्ट दैट, आई विल ओपन दैट। ओके, सो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे उबंटू 20.04 आ गया। आगे यहाँ पे 17 पहले इंस्टॉल है, 17 भी कर सकते हो, 20 यहाँ पे आ गया है 2.53 GB। ओके, तो आप उसको चूज करो। यहाँ पे आ गया उबंटू 20.04 डेस्कटॉप। जो मैंने इमेज सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ गई, पहले एम्प्टी था, अभी ऊपर में एक और ऑप्शन ऐड हो गया यहाँ पे, दैट इज उबंटू 20.04 डेस्कटॉप आ गया। तो मीन्स नाउ वी हैव पुट, जैसे डीवीडी हम लोग डीवीडी राइटर में रखते हैं, ये सेम प्रोसेस है। इसमें हमने क्या किया, इमेज फाइल को, आईएसओ फाइल को हमने क्या किया, डीवीडी राइटर में पुट कर दिया। तो उसके लिए हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया। नाउ क्लिक ऑन टू द ओके, बस ओके कर दो, उसको क्लोज कर दो। वो होने के बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक करो इसको स्टार्ट करने के लिए। नाउ वी हैव टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन ऑफ Fedora, Ubuntu onto that virtual machine. तो जस्ट डबल क्लिक और आइदर यू कैन, यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन आता है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनटू दैट वर्चुअल मशीन। तो डिस्क चेक करेगा, जो हार्ड डिस्क हमने सिलेक्ट की थी इंस्टॉलेशन के लिए, इज चेकिंग दैट पर्टिकुलर डिस्क। तो चेकिंग डिस्क, चेक दैट ओएस इंस्टॉल करने है तो पहले हार्ड डिस्क को चेक कर लेता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के लिए कि आइदर दैट इज ओके और नॉट। So your installation will take some time, either 15, 20 or 25 or 30 minutes depending on to the what version you are installing. अगर पुराना वर्जन है तो इमीडिएटली हो जाएगा, अगर रिसेंट वर्जन है तो दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। जनरली फेडोरा 20 या 30 मिनट्स में होता है, उबंटू 10-15-20 मिनट में हो जाता है आगे। इसमें किसी को डाउट, अब तक जो हमने देखा उसमें किसी को डाउट? दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, downloading of Oracle VirtualBox, installation of Oracle VirtualBox, creating virtual machine, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद सेटिंग में जाके इमेज फाइल कैसे लोड करना है पर्टिकुलर ऑप्टिकल ड्राइव में, वो उसके बाद स्टार्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, तो नाउ द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड। तो यहाँ पे ट्राई उबंटू दोनों वर्जन्स ऑप्शंस आते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। आपको अगर फुल प्लेस इंस्टॉल नहीं करना है, आपको अगर लाइव इसमें देखना है तो ट्राई उबंटू आप यहाँ से कर सकते हो। आपको लगता है कि इंस्टॉल करने के पहले मुझे उसका इंटरफेस चेक करना है, कैसे दिखता है, क्या ऑप्शंस है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ट्राई उबंटू पे यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको उबंटू की स्क्रीन देगी, तो वो इंस्टॉल नहीं होगा आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर। दैट विल सिंपली वर्क इन अ लाइव इंस्टॉलेशन। ओके, मगर आपको अगर परमानेंटली लगता है उबंटू वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल हो तो सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, दैट इज इंस्टॉल उबंटू। तो ट्राई उबंटू यानी लाइव, यानी ये परमानेंटली इंस्टॉल नहीं होगा। यू विल टेम्परेली प्रोवाइड द इंटरफेस टू मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। हर बार आपको ये करते जाना पड़ेगा, हर बार आपको आईएसओ फाइल लगेगी और आईएसओ फाइल थ्रू ही वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा।
but आपको लगता है कि I want to permanently install that operating system, then you can go for the second option, that is install Ubuntu. तो click on to that. Language पूछेगा English, okay, then go for continue. Normal installation updates मत करो क्योंकि recent है, तो don't go for the updates. It again takes time and the bandwidth. And normal installation you can go for, by default option is normal and minimal installation. अगर machine support ज़्यादा नहीं करता है तो आप minimal installation के लिए भी जा सकते हो, but by default जो standard configuration होता है उसके लिए आप normal installation के लिए जाओ. You can go for continue. So it will take some time. Trying the files and making the installation of the file. So you will give the warning that is this computer currently had not detected operating system, क्योंकि हमने raw hard disk बनाई थी और इसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, तो वो बता रहा है कि दिस कंप्यूटर करंटली हैज नो डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट विल यू लाइक टू डू? तो इरिक डिस्क कैन इंस्टॉल उबंटू. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन व्हिच वी कैन सिलेक्ट, क्योंकि हमने रॉ हार्ड डिस्क बनाई है 20 GB की और उसके ऊपर हमें उबंटू ही डालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्टली गो ऑन टू इंस्टॉल नो ऑप्शन. ओके, तो पार्टीशन वगैरह बताएगा कि राइट द चेंजेस टू द डिस्क. ओके, कंटिन्यू. देन इट विल आस्क फॉर द टाइम जोन. तो बाय डिफॉल्ट कोलकाता जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, कोलकाता, तो वो स्टैंडर्ड है, कोलकाता सिलेक्टेड. आप सिंपली कंटिन्यू क्लिक करो. देन इट विल आस्क टू क्रिएट अ यूजर नेम. It is your name. You can call it as a information. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हो. So this is an important aspect of this, because whenever you log into your system, this username and password is very much important. Okay, so you can give any username. So that is a username by which you can log in your system. So I will give the IT machine, that is ITMC. Okay, this is a username, and you can assign any password, and you can note down this particular password, because this is important. Next time when your machine is started, your Ubuntu is started, you have to put this particular password for login onto that system. So you can assign any password. Student, password which I have assigned. Sir, just a minute. Last for 2 times, then continue. This is the full name of your machine, that is information technology. This is a username. ITMC is a username which I have given. And it will start copying the files, that is the installation process is started. Okay, so यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है आपको नीचे में, तो कॉपिंग फाइल्स, तो इट विल स्टार्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है. So it takes a time, that is maybe 10 or 15 minutes. But Ubuntu is comparatively lightweight as compared to the Fedora. Okay, so many of the students or the researchers will use this Ubuntu. But if you want to use for the commercial version, then CentOS, Red Hat, and Fedora is the best. Okay.
Team is installing the system, configuring. Device scanning is going on. Excuse me, sir. कुछ doubt है? Put it in a chat box. So जब तक S- installation में I will answer the questions or doubts you have in your mind. You can ask any question, any silly question. No problem. Because this is for your learning and first time you are using these tools and installing the operating system. So ask the question open-minded. So do not hesitate कि बाकी लोग क्या बोलेंगे यार ये क्वेश्चन सिली है ऐसे नहीं. If you want to learn anything, then you can ask anything. कुछ भी. Not regarding the installation. If you want to ask about the virtualization or Linux distributions or whatever. On your machine, if it takes a longer time to download the image, don't worry, I will share this recording with you. Okay, तो आप उसको देख के भी कर सकते हो या फिर हम लोग कल एक और सेशन लेंगे at 3:30. आप डाउनलोड करके रख दो image file. Okay, and parallelly again I will explain once again how we can make an installation of this. क्योंकि काफ़ी बार कुछ issues आते हैं. और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू गो फॉर द वर्चुअलाइजेशन, अगर आपको वर्चुअलाइजेशन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो अगर आपका रिसेंट लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो मेनी ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप सपोर्ट द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है इंटेल और AMD. तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है व्हेन वी बाय द मशीन दैट पर्टिकुलर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आर डिसेबल्ड क्योंकि आपको वो काम का नहीं है. बट नाउ एज यू आर यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन tool on your desktop or laptop, you have to enable that. Sometimes that will give the error message कि virtual box काम नहीं करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा. तो एक बायस में जाके सेटअप में जाके वहाँ पे एक ऑप्शन होता है वर्चुअलाइजेशन टूल का. तो अगर वो डिसेबल्ड है तो देन यू कैन enable that particular virtualization technology on your desktop from the BIOS setup. Ubuntu in controller IDE नहीं वो आ जाता है. as I can show Red Hat. ओके, जैसे हम लोग Red Hat पे देखते हैं सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेजेस, क्लिक ऑन टू द फर्स्ट ऑप्शन ऐड ऑप्टिकल ड्राइव. ये ऑप्शन है आपके पास. गौरव, if this option is visible to you, again open that setting. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो सर्कल वाला है, हार्ड डिस्क नहीं करना है आपको. फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ऐड ऑप्टिकल ड्राइव. ओके, ऐड ऑप्टिकल ड्राइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करके आएगा. ओके, ऐड करने के बाद जैसे मुझे रेड हैट चाहिए तो मैं रेड हैट सिलेक्ट करूंगा. ओपन करने के बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे रेड हैट आ गया अटैच होके. ओके, रेड हैट सिलेक्ट करके ओके नहीं आएगा, चूज करके आएगा यहाँ चूज ऑप्शन. तो ये सिलेक्ट करो, आपका वहाँ पे आ जाएगा. ओके नहीं आएगा वहाँ पे ऑप्शन. इज इट क्लियर? यस गौरव, इज इट क्लियर? ओके नहीं आएगा वहाँ पे आएगा चूज. इसे यहाँ पे मैं फिर से रिमूव करता हूँ, फिर से आपको अटैच करके दिखाता हूँ एक बार. कंट्रोलर आईडी, ऑप्टिकल ड्राइव, ऐड, रेड हैट, ओपन. जो भी सिलेक्ट हुआ है आपने सिलेक्ट किया था बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है. ओके, आप देखो रेड हैट की साइज क्या है, 7.31 GB. तो दैट इज सिलेक्टेड एंड जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द चूज ऑप्शन. तो चूज आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे रेड हैट का DVD फाइल, ISO फाइल यहाँ पे आप दिखेगा. ये दिखना चाहिए आपको. इज इट क्लियर?
Gaurav Lad. You can share your screen. Is it possible to share your screen, Gaurav? Lakshmikant is asking, sir, when we allocate the RAM, we will be able to use our full RAM with Windows, or our RAM is Windows will be reduced. That is in the shared mode. That is in the share mode. So whatever resources you will use, that is in the share mode. जैसे अगर 8 GB और 2 GB आपने allocate किया है तो 2 GB वो आपके virtual machine के लिए allocated होगी, and 6 GB are now available with the host operating system, that is with Windows operating system. हाँ, अगर आप वर्चुअल मशीन रन नहीं कर रहे हो, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स अगर रन नहीं कर रहे हो, तो 8 GB पूरी आपकी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलेगी. मगर जैसे ही आप वर्चुअल मशीन रन करोगे, तो दैट पर्टिकुलर रैम विल बी शेयर्ड टू अ पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन फ्रॉम योर बेस रैम. अगर आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स रन नहीं कर रहे हो, सिंपली आपका अगर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, तो आप पूरा 100% आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हो. मगर जैसे आप ये वर्चुअल मशीन रन करना शुरू करोगे, तो वो क्या करेगा, आपका जो बेस रैम है उसमें से वो शेयरिंग चालू कर देगा. एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि आप पूरी 100% रैम वर्चुअल मशीन के लिए मत रखो. जैसे 8 GB में से 2 GB, 2.5 GB यू कैन कीप इट रिजर्व फॉर योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी की जितनी बचे, हमें पता है कि 2 GB 3 GB सफिशिएंट फॉर योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. उतना आप छोड़ के बाकी का जो स्पेस बच रहा है, दैट यू कैन अलोकेट टू योर वर्चुअल मशीन्स, क्योंकि वो आपके पास जितना रैम अवेलेबल है उसमें से ही वो शेयर करेगा. दैट इज इन द शेयर्ड मोड. दिस इज कॉल्ड द मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट. यानी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर रिसोर्सेज पे क्या कर रहे हैं, मल्टी टेनेंसी, यानी मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन हो रहे हैं. And every virtual machine required the RAM, storages, and the processor, and all these are onto the shared mode. जैसे आपके पास 8 GB रैम है, आपके होस्ट ओएस को 2 GB चाहिए, आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया, उसको आपने 6 GB दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो आप दूसरा वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते. हाँ, आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 2 GB दिया है, एक वर्चुअल मशीन को 2 GB दो, दूसरे वर्चुअल मशीन को 2 GB, तीसरे वर्चुअल मीन्स 3 वर्चुअल मशीन यू कैन क्रिएट. Every virtual machine is having a 2 GB of RAM and 2 GB for your host operating system. So, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, बट दैट इज शेयर्ड. आप 100% किसी के लिए नहीं दे सकते. ओके. Windows subsystem means what? Devansh Chaudhary. By creating a second partition on your hard disk. Devansh is asking, sir, instead of VM, can we use a Windows subsystem for Linux? Windows subsystem means what? By creating another partition on your hard disk. No, sir. It's actually a built-in function in Windows. By that, we can Yes, get Devansh. in. Am I audible? Yes, Devansh.
Yes, nowadays that features are available. Even your Windows 8 and Windows 10 will provide the Hyper-V to create that. No need to use a third-party tool just like Oracle VirtualBox or VMware Workstation. Yes. So new features are added, right? As the operating system is adopting this virtualization concept, your Windows 8 again provide the Hyper-V, the hypervisor. That is the virtualization tool within your Windows 8 and Windows 10. If you go for the Windows 8 or Windows 10 professional version, that offers the Hyper-V to uh, create a virtual machine and install any Linux distribution over that. So that is again possible. Now the container-based technology is also there, as you can talk about this particular subsystem. So again, that is a container-based system. That is part of the containerization. Okay, so we can create a container. No need to create the virtual machine using this third-party tool, and you can directly run that particular Linux kernel over that particular container. So now technology are changing. These are the older one. That is, we can go for the Oracle VirtualBox and all this thing. So if you have that kind of system, then you can go for that. But many of the student is not having this recent version of Windows or professional version of Windows 8 or Windows 10. So there's a simple option that free of cost you can download the Oracle VirtualBox and then install the Linux operating system over that. क्योंकि सभी लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती है available because this is a containerization and professional version will offer that. So okay, if you have, you can make use of that. But for the common people or common student, this is the way. On any system, any type of configuration that is underlying hardware you have, either desktop or laptop, this is a simple way. That is Oracle VirtualBox will require a minimum space, minimum size to download. अगर VMware workstation जाओगे तो again that is a bulky one that requires a lot of time to download. Comparatively, Oracle VirtualBox बहुत lightweight है, 103 MB का है. कॉन्फ़िगरेशन में भी काफ़ी इजी जाता है आपको Oracle VirtualBox में because this is just free and educational version. This way other options are available. वो तो बहुत सारे का technologies है फिर containerization and all this thing. Even from the cloud we can go for using that operating system. Okay, is it clear? Installation of this Ubuntu is over and it will ask to restart our machine. तो restart करने के बाद हमें machine restart करेगा. Okay. So it will ask, please remove the installation medium and then press enter. We will check either that particular storage, so that is removed, already renewed by your system, and it will start. When you press the enter button, it will open the interface of Ubuntu. So it will take some time to load that OS install जो हमने किया है. अब आप इसमें देखो सारे बाकी के जो वर्चुअल मशीन है पावर ऑफ मोड में है. पावर ऑफ, Red Hat is power off, Ubuntu 20 is power off, and Red Hat is again power off. But our Ubuntu 20 new VM is in the running mode. तो आप parallelly 4-5 मशीन भी रन कर सकते हो. जैसे मैं Red Hat भी ओपन कर सकता हूँ, Fedora भी या Ubuntu 20. So it will open the separate window for every virtual machine and it will show the. आप parallelly 5-6 मशीन में भी काम कर सकते हो आप. हमने जो नाम दिया था यहाँ पे आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक, इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड. यू कैन पुट द पासवर्ड जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया था.
Okay, so this will some introductory screen will be shown. Skip करो उसको done कर दो. And from where you got this particular interface. और basically आपका काम जो है वो terminal पे है, so you can search anything from here. तो terminal पे हम लोग command execute करते हैं, तो यहाँ पे terminal आप type करो तो आपको ये prompt मिलेगा. जैसे हमारे Windows में command prompt होता है, तो here we have a terminal. Click onto this terminal. It will show this particular prompt. This is called as a prompt, command prompt for getting the command, or terminal prompt, and here we can execute a command. Time, date for listing the files, cal command, cal. Okay, so here we have to execute a command. जो आपको मैडम पढ़ाएंगे, वो आपको सारे commands कहाँ पे execute करना है, onto the terminal. So in this way we can install our operating system, Ubuntu operating system on VirtualBox, virtual machine. So is it clear everyone? इस तरह से आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो वर्चुअल मशीन में. वर्चुअल मशीन बनाओ, ISO फाइल डाउनलोड करो, एंड यू कैन ट्राई एनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दिस पर्टिकुलर Oracle VirtualBox. यहाँ पे हमने देखो, मैंने मेरे मशीन के ऊपर काफ़ी सारे इंस्टॉल किए. फेडोरा भी इंस्टॉल किया है, रेड हैट 8.1 भी किया है. नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड उबुंटू 20. यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं विंडोज 8 के लिए भी बना सकता हूँ, विंडोज 10 के लिए भी बना सकता हूँ, विंडोज 95 के लिए भी बना सकता हूँ. सो इन दिस वे यू कैन इंस्टॉल. और ऑलमोस्ट सभी जो लिनक्स फ्लेवर है उनका टर्मिनल सेम ही होता है, कमांड सेम ही होते हैं. फेडोरा चाहो आप रेड हैट यूज करो या उबुंटू करो, ऑलमोस्ट 90% commands are same. You got a same command, you got a same terminal type. Come out of this, exit, shut down. यहाँ से power off कर दो, आपका machine power off हो जाएगा. And then you can close this. Automatically आपका virtual machine close हो जाएगा. You can close your Oracle VirtualBox. Is it clear? So I think this, to everyone this is understood. That is how we can download Oracle VirtualBox, install it on your machine, download the ISO file, image file of Red Hat, Fedora or Ubuntu from the site, how we can create the virtual machine in Oracle VirtualBox, how we can link our ISO file to the optical drive, then making installation and using a interface of that operating system for our purpose. So I think this is enough for today. So you can try this. I will share this particular Google Drive link to you for your reference for installing this OS. And if you have any doubt, again we will take a session after 3:30 tomorrow at 3:30 after your practicals. Okay. So this is for today. Thank you. Thanks a lot, sir. So tomorrow we have second batch, IT2 batch having the practical. Those of you who have done it successfully will do the practical. Otherwise, those of you who they will simply watch. What I am doing on my screen. I will also share the commands that you have to try on. Okay, we'll start with the first practical basic commands.